Role of surgery in congenital heart diseases and the management of the aortic, vascular, and pericarditis. So the cardiac surgery was started by Sir Henry in 1925. Reported the first mitral hemiectomy in the BMJ. He wrote that heart should be as amenable to surgery as any other organ. So before 1925, the heart diseases were not treated with the surgery. And he said that the heart should be as amenable to surgery as other diseases of the surgery. The main problem was the maintenance of the blood flow, particularly to the brain during the surgery. So during cardiac surgery, it is our main objective to maintain the circulation while we stop the heart. Further progress occurred upon the development of cardiac pulmonary bypass in mid-1950s. First used in 1953, cardiac pulmonary bypass has since revolutionized cardiac surgery employed in any process in which the heart and lung need to be stopped temporarily. Success of the modern cardiopulmonary bypass is attributable to the development of new biomaterials and sophisticated oxygenating devices and greater understanding of the pathophysiological consequences of the cardiopulmonary bypass. So here is a schematic diagram of the cardiopulmonary bypass. Actually, in the cardiopulmonary bypass, what we do is we bypass the heart for the circulation and the pulmonary system. As we all know, blood comes from the body into the right atrium से right ventricle में जाता है और right ventricle से फिर pulmonary arteries के जरिए से दोनों लंग से ऑक्सीजनेट होने के बाद लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है. ठीक है. So हमने इस सर्कुलेशन को बाईपास करना है so that heart stops pumping and we can proceed with our surgery safely. So हम करते क्या है कि हम जो venous blood आ रहा होता है राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू उसको हम एक चैम्बर के अंदर दाखिल करते हैं जहाँ से वो फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद एक ऑक्सीजनेटर जो कि काम है लंग्स का ऑक्सीजनेट करना. तो हम एक ऑक्सीजनेटर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं. वहां से ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होने के बाद फिर से दोबारा पंप के अंदर जाता है. कुछ सर्कुलेशन इसकी दोबारा हम रिवर्सिबल करवाते हैं ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजनेशन डेवलप हो सके. फिर इस ऑक्सीजनेटर से होके आर्टीरियल ब्लड फ्लो के अंदर वापस चला जाता है और यही ब्लड फिर सारी बॉडी से सर्कुलेट होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उधर आएगा फिल्टर के अंदर, फिल्टर से वापस इधर ऑक्सीजनेटर के अंदर और फिर बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने लगेगा. सो द पर्पस ऑफ हार्ट एंड लंग्स व्हिच वाज टू पंप द ब्लड एंड ऑक्सीजनेट द ब्लड उसको हमने सारे को टोटली बाईपास कर दिया. तो ये सिस्टम लगाया जाता है बिफोर प्रोसीडिंग टू एनी कार्डियक सर्जरी जिसके अंदर हम हार्ट को स्टॉप करते हैं.